Are Liverpool finally coming back to the track? This is now 5 games unbeaten for the Reds और ये इन पांचों मैचेस में सबसे कन्विंसिंग विन थी लिवरपूल की अगेंस्ट ब्राइटन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था मैच का वो यही था कि वुड साला स्टार्ट, क्या वो स्क्वाड में होगा या नहीं। बट स्लॉट एंड साला हैव रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड साला स्टार्टेड फ्रॉम द बेंच। जो गोमेज हैड एन अनफॉर्चुनेट इंजरी एंड फिर उसी टाइम साला को इंट्रोड्यूस किया स्लॉट ने। एंड जैसे ही स्टार्टेड प्लेइंग ना तो वो लग रहा था दैट ही वांटेड टू कंट्रीब्यूट स्ट्रेट अवे। देयर वाज 2 और 3 सिचुएशंस। एक तो उसकी जो फर्स्ट टच में सिचुएशन थी जहाँ पे ही रोल्ड द बॉल टू मैकलिस्टर हु कुड हैव स्कोर्ड। He was not selfish at all in his decision making and he was tracking back also. लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है behind the scenes because he was very involved throughout the game and it helped Liverpool also. Defensively they were strong. किस्मत ने थोड़ा साथ दिया क्योंकि जब 1-0 स्कोर था तो ब्राइटन के पास मल्टीपल चांसेस थे जहाँ पे दे कुड हैव इक्वलाइज्ड। और द मोमेंट अ टीम इक्वलाइजेज अगेंस्ट लिवरपूल, लिवरपूल ड्रॉप्स बैक, लिवरपूल गेट्स बैक। लास्ट के कुछ मैचेस में ये देखने को मिला है दैट लिवरपूल कंसीड्स किस्मत की वजह से, खराब डिफेंडिंग की वजह से, एंड देन वी डोंट गेट अ रिजल्ट। बट यहाँ पे चीज़ नहीं हुई थैंक्स टू ह्यूगो एकिटिके हु इज़ इन ब्रिलियंट ब्रिलियंट फॉर्म। 4 league goals in his last 2 games for Liverpool. And अभी तक की जितनी साइनिंग्स हुई थी ही इज़ दैट वन प्लेयर हु इज़ लुकिंग लाइक दैट 80-90 मिलियन प्लेयर जो लिवरपूल ने खरीदा था बिकॉज ही इज टर्निंग गेम्स टुवर्ड्स लिवरपूल। लिवरपूल आर स्लोली क्लाइंबिंग अप और एक पर्टिकुलरली सब चीज़ें सही नहीं हुई हैं बट यू कैन सी फ्लोरियन वर्ट्स गेटिंग इनटू एक्शन, गेटिंग इनटू थिक ऑफ थिंग्स। एवरीथिंग मूव्स रिवॉल्व्स थ्रू आउट हिम। जो भी चीज़ है, जो भी सेंटर पॉइंट है अटैक, इट गोज थ्रू हिम एंड ही इज़ गेटिंग कॉन्फिडेंट। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि ही इज़ फिजिकली गेट नॉट गेटिंग बुलेड एनी मोर। ही इज़ कंटेस्टिंग फिजिकली एंड विनिंग हिज ड्यूल्स ऑल्सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीमियर लीग। एनफील्ड में ये रिजल्ट मिलना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिवरपूल क्योंकि एनफील्ड हैज़ बिन दैट प्लेस थ्रू आउट द ईयर्स जहाँ पे लिवरपूल लुक्स अनबीटेबल। न्यू साइनिंग्स धीरे धीरे करके अपना इम्पैक्ट डाल रही है। Apart from Isak and Frimpong, I think everyone is looking like a Liverpool player. They are more involved in the build-ups, in their defensive duties. जैसे Kirk is, he was struggling. Robertson ने replace कर दिया था टीम में, but now he has come back stronger. And उसके overlapping runs को match करते हैं forwards. गैकपो के साथ उसकी ज़्यादा अच्छी मतलब partnership दिख नहीं रही है, but in general he is playing very good. He is playing to his strengths. जब मैच खत्म हुआ तो Salah was the last player who was taking that Anfield atmosphere and he was thanking everyone, touching the crest and थोड़ा emotional भी लग रहा था and people are playing into that narrative that it could be his last game for Liverpool. I'm not saying कि it is definitely not his last game for Liverpool क्योंकि आज के टाइम में it just goes like this. A transfer deal is done between the clubs and we just keep wondering कि कैसे हो गया. एंड इफ दिस वाज हिज लास्ट गेम, जो कि पर्सनली मुझे नहीं लगता क्योंकि ही हैज़ अ लॉट टू कंट्रीब्यूट फॉर लिवरपूल। ही असिस्टेड एकिटिके फॉर हिज सेकंड गोल। इस असिस्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि सालाह ने मोस्ट गोल कंट्रीब्यूशंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया फॉर अ सिंगल क्लब जो कि वेन रूनी का था। नाउ सालाह हैज़ दैट रिकॉर्ड, मोस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स फॉर अ सिंगल क्लब। And if this is his last contribution, he came with a goal contribution and he might end up with a goal contribution. Mohamed Salah is one true Liverpool legend, without doubt. Arsenal and Wolverhampton का मैच बहुत रूटीन लग रहा था। Number one team, the league leaders playing the 20th team who are bound to be dropped, who are doomed, and they will play in the championship for sure. तो मैच ऑन द पेपर तो बहुत easy लग रहा था। Martinelli started, Gyökeres was there, and Gyökeres के पास chance था to get some goals, to get that confidence back, because he's donning that legendary number 14. And that number comes with an expectation in Arsenal colours. Gyökeres and Martinelli ने दोनों ने impress नहीं किया, especially Martinelli ने, because first half में there were so many incorrect decisions from him, heavy touches and overhead passes. There were multiple occasions, especially 2 occasions जहाँ पे corners के through he could have scored twice for Arsenal and वहाँ से game easy हो जाती. But as जैसे game लंबी चल रही थी तो it was looking like कि Wolves might take a point from here. But then Arsenal was too strong not to win this game. They eventually got the lead and then stoppage time में Wolves scored out of nowhere and it was वो जो 4-5 मिनट थे ना for Arsenal fans,
फॉर द इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइटल रेस वो ऐसा लग रहा था कि बिकॉज इट हैज़ हैपेंड मल्टीपल टाइम्स विद आर्सेनल थ्रू आउट द ईयर्स, खासकर पिछले 3-4 साल में, जहाँ पे दे आर इन द कमांड ऑफ द लीग एंड देन इट स्लिप्स राइट अवे फ्रॉम देम। और ये ही वो 3-4 मिनट थे जहाँ पे लग रहा था कि दे विल ड्रॉ। सिटी का मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ है, सिटी विल विन, सिटी विल गेट अहेड, एंड वंस सिटी गेट्स अहेड देयर इज नो टर्निंग बैक। बट Gabriel Jesus had other plans, and it was so fitting कि 1 साल की इंजरी के बाद he was returning and he was involved in that key goal for Arsenal. For Arsenal जिसके पास अभी भी 5 पॉइंट की लीड है at top of the league, and it was such a important moment for Arsenal's season. And if they win the title, they will look back to this goal, this moment, जहाँ पे इट वॉज लुकिंग लाइक ये एक और ड्रॉ है। एंड कॉन्फिडेंस हिट हुआ था आर्सेनल का, बिकॉज 3 बैक टू बैक अवे मैचेस में कोई रिजल्ट नहीं मिला था। एंड जब 60-70 मिनट्स हो गए थे एंड दे वर नॉट गेटिंग द गोल, तो वो लग रहा था कि हाँ इम्पैक्ट हो सकता है। बट देन Declan Rice, he took that opportunity on him. He was the one who was creating chances, who started dominating. And I have to mention Arsenal's captain Saka, बिकॉज आर्सेनल का जो पूरा अटैक था ना, जो उनका पूरा अटैक जितनी बार भी बन रहा था, क्रिएट हो रहा था, इट वॉज मतलब मेजर जो चीज़ें हो रही थी वो राइट विंग की साइड से हो रही थी, जहाँ से साका वॉज अटैकिंग, ही वॉज क्रिएटिंग ऑल द मीनिंगफुल चांसेस। बेन वाइट की रन पिक कर रहा था, ही वॉज क्रॉसिंग इन, ही वॉज क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चांसेस फॉर हिज टीम मेट्स। एंड देयर टू टाइप्स ऑफ कैप्टन बेसिकली। एक होते हैं जो बहुत लाउड होते हैं, हु कमांड्स रिस्पेक्ट, हु ऑर्गेनाइजेस एवरीथिंग, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ जॉर्डन हेंडरसन फॉर लिवरपूल। और एक होते हैं हु आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ देयर टीम, वो दिखता है कि दे आर द बेस्ट प्लेयर्स एंड दे आर द वन हु विल मेक डिफरेंस। एंड साका फॉल्स इनटू द लेटर कैटेगरी। He was the one who created both of the goals for Arsenal. And Arsenal are sitting top of the table again, thanks to their captain Bukayo Saka, who was brilliant again. जब चीज़ें काम नहीं करी थी फर्स्ट हाफ में, तो आर्टेटा ब्रॉट ऑन मरीनो, ऑडेगार्ड एंड ट्रॉसार्ड फ्रॉम द बेंच। लाइक ऑल थ्री ऑफ देम आर गेम चेंजर्स, एंड टू इंट्रोड्यूस देम एक साथ, तो दूसरी वाली टीम के ऊपर भी वो इम्पैक्ट आएगा कि वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स अगेन। और वुल्व्स बहुत अच्छे से लो ब्लॉक में खेल रही थी एंड दे वर अवॉइडिंग मोस्ट ऑफ द चांसेस, बट द मोमेंट दीज थ्री वर इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद से आर्सेनल के पास प्रॉपर मोमेंटम आ गया था। ट्रोसार्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आई थिंक ही हैज़ बीन द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर फॉर आर्सेनल फ्रॉम द लेफ्ट। He is the one who have created goals, assisted, and also won points for his team. Same goes for Marino. Marino, the thing he provides for Arsenal वो अलग ही एंगल है। एक तो वो फॉल्स नाइन वाला रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है, एंड इवन इफ ही इज प्लेइंग इन दैट मिडफील्ड, he is the one who moves the ball frequently and always looks to attack. And ऐसा positive person चाहिए, positive player चाहिए टीम में when they are looking for a goal. Big result for Arsenal. And now in next game they move to Goodison Park to play Everton, जो कि एक और मुश्किल गेम होगी, especially considering their away form. Barcelona beat Osasuna comfortably and they are sitting easily at the top of the table अभी। और ये मैच थोड़ा सा मुश्किल बना दिया था ओसासुना ने उनके लिए, एंड ऑल्सो फॉर सम मिस चांसेस, बिकॉज कॉन्टीन्यूसली अटैक कर रहे थे। और जब लाइनअप आई थी ना, तो लग रहा था कि यमाल विल बी द वन हु विल बी प्लेइंग इन दैट नंबर 10 रोल। वॉज दिस वन मैच जहाँ पे रूनी बरदाजी वॉज प्लेइंग in Yamal's position, and Yamal was playing the number 10 role and he was controlling the game also going forward. तो लग रहा था वही होगा, बट रफीनिया को वहाँ पे रखा हुआ था। एंड कोई अगर टीम लो ब्लॉक में खेलती है तो आपके नंबर 10 के पास ज़्यादा रोल नहीं होता टू फ्रीली मूव, एंड ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ नंबर 10 हु मूव्स द बॉल वेरी फास्ट और फाइंड दैट प्रॉपर स्पेस। ही इज़ द वन हु टेक्स ऑन प्लेयर, हु फाइंड स्पेसेस एंड देन शूट्स। और जो फर्स्ट गोल था वो उन दो लोगों की वजह से ही बना, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के, for them to contest for the trophies, and that is Pedri and Rafinha. Pedri brilliantly dribbled past through the Osasuna midfield and then picked a proper pass for Pedri to finish it. उस गोल के बाद थोड़ी रिलैक्सेशन आ गई थी बार्सिलोना के पास, एंड कुंडे हैड अ वेरी गुड गेम एंड ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर द सेकंड गोल, जहाँ पे रफीनिया फिनिश्ड इट and sealed the victory for Barcelona. I want to mention Eric Garcia. That player, I think, has been the key player for Barcelona this season. Not just only playing in multiple positions, but playing effectively also. He's the one जो Frankie de Jong को इस टाइम टीम से बाहर रख रहा है, because his impact is so important for Hansi Flick that he has to play for Barcelona. He has to play that game. Ferran Torres is in great touch, second top scorer in La Liga, and he is getting that knack धीरे धीरे.
हाउ टू प्रॉपर्ली प्ले एज सेंटर फॉरवर्ड, और स्पेशली जब आपके पास रैशफोर्ड एंड रफीनिया देन यमाल ऐसे प्लेयर्स हैं behind who can thread passes, who can find you anywhere, तो of course your confidence will grow. 7 पॉइंट की लीड बहुत ही सिग्निफिकेंट लीड है फॉर बार्सिलोना इस पॉइंट पे. नेक्स्ट मैच उनका कोपा डेल रे में है एंड देन दे फेस विलारियल हु आर फ्लाइंग हाई इन ला लिगा एंड करंटली आर सिटिंग थर्ड इन द टेबल एंड आर चैलेंजिंग फॉर दैट यूरोपियन स्पॉट्स अगेन. बार्सिलोना अभी उस पोजीशन पे है जहाँ पे हांसी फ्लिक कैन ट्राई मल्टीपल कॉम्बिनेशंस इन द मिडफील्ड एंड द अटैक, एंड इवन इफ इट डिडंट वर्क तो भी दे हैव सफिशिएंट लीड कि यहाँ से स्लिप अप करना मुश्किल होगा फॉर बार्सिलोना, स्पेशली कंसिडरिंग रियल मैड्रिड्स फॉर्म एंड प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग राइट नाउ. It looks like that it is Barcelona who will take away the trophy.